Hello, guys. Welcome to Expats. This is our cricket show. We have with us Shoaib and Kunal from India, and I am Keyur, your host from Berlin. Welcome, Shoaib. Hi Welcome, everyone. Kunal. Everyone. We have this segment on cricket, upcoming ODI series, India versus England. Uh, I know this is a short ODI series, but इसमें जो सिलेक्शन हमने किया है इंडियन टीम ने उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे एंड ऑल्सो बातें करेंगे जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर एंड एनालिसिस एंड मेकिंग अवर टीम 11. शोएब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई के बारे में? या आई थिंक सी हमने बहुत सालों से ये रहा है कि हम ओडीआई तो पेटीएम ट्रॉफी के नाम पे काफ़ी जीतते थे, बट जब भी ट्रॉफी की बात होती थी, रियल ट्रॉफी की, तो हम वहाँ पे नॉकआउट्स में हार रहे थे. तो मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम दैट वी टेक दिस 3 मैचेस मोर लाइक अ प्रैक्टिस, लाइक व्हाट ऑस्ट्रेलिया डज और इवन इंग्लैंड यूज टू डू. तो we don't have to go for regular selections, but I would like to see some unique things जो हम पूरे चैम्पियंस ट्रॉफी के फोकस से ही करें इन 3 मैचेस में. इवन इफ वी हैव टू मेक सम टफ कॉल्स, ऑल्दो काफ़ी टफ कॉल्स या इजी कॉल्स हो चुके, 15 ही लोग हैं, उनमें से 11 सिलेक्ट करना है 16 में से. बट स्टिल आई थिंक कि दिस हैज़ टू बी टेकन एज ए मोर लाइक ए प्रैक्टिस थिंग. तो जहाँ पे चांसेस नहीं है वो ज़्यादा होंगे तो बेटर रहेगा. बट आई थिंक इट्स वेरी क्रूशल फॉर द ओवरऑल टूर्नामेंट, क्योंकि इसके बाद कुछ होना नहीं और काफ़ी टाइम से मतलब हमने और कोई ओडीआई खेला भी नहीं है. सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस. All right, your views on the upcoming ODI series? As Shoaib said, it is very important for us because we know there's an upcoming tournament coming in, Champions Trophy, and हमको चाहिए कि इस बार हम लोगों का मूड खराब नहीं हो इन एन ओडीआई टूर्नामेंट लाइक 19 नवंबर को हुआ था, everyone knows. तो it is very important and आज पिक्चर्स भी आई है नई जर्सी में. इट लुक्स फ्रेश एंड लगता है कि कुछ होगा इस बार फाइनली. लाइक अभी T20 वर्ल्ड कप में हुआ तो उम्मीद है सबको रहती है, बट वही है कि खड़ा हूँ आज भी नहीं हो जाए. Yes, so now we see the team selection. Here we have, can you see my screen? Yes. Yes. Yeah, so all-rounders, we have 4 all-rounders: Washington Sundar, Ravindra Jadeja, Akashchopra, Hardik Pandya. And bowlers, we have 5 bowlers: Kuldeep Yadav, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Mohammad Shami, Varun Chakravarti. And batters, as always, we have Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Rishabh Pant, and Shubman Gill. So, Shoaib, I'm coming to you. How do you like the team selection so far? So I think the best thing which I liked is कि ट्रॉफी के टाइम पे द selectors didn't go by those ego and what we say कि teaching some lessons. There was enough time to contract वगैरह में सब कर दिया था. So they brought back Shreyas Iyer, which was very important because he was very Yes. crucial. People forget about it, how important his knocks were in World Cup. Second thing, I Yeah. think KL Rahul should be the wicket keeper. I think they may have done the same thing. Otherwise, Yeah. In T20 World Cup, we have seen like they chose Sanju over him. That was obviously a good call. But I think here importance of KL and Shreyas is too much in this format. So that way, I think I really liked this squad. One more thing which I liked is that um, they didn't bring too many lefties in the mix during the ODI World Cup. I don't know if that was the reason we lost, but having Yashasvi and Rishabh in the mix gives us those kind of cushions. I'm Yes. a Yes. little bit doubtful on why having Jadeja and Akshar, but again, Yeah. like Yeah. Sundar is not ready, so maybe we need two good all rounders at certain moment in Dubai and rest of UAE. So see, it's
easy to criticize on the hindsight, but I think they have done 90 to 95% good job in terms of selection. Mostly it depends on how they are going to perform at the day. All right. So Kunal, your views. जल्दी से आप हिंदी में बता सकते हैं हमको. The only thing scares me about this squad is not having Bumrah. कोई अपडेट नहीं अभी तक एंड हमको पता है कि उसने क्या किया इंडिया के लिए. So we really want Bumrah to be in for Champions Trophy even if it's not for the ODI series. But हम चाहते हैं क्योंकि उसका फॉर्म का पंगा नहीं है, वो तो बस आता है और अपना लेके निकल जाता है. तो इट इज मोर लाइक कि बुमराह के बिना ये टीम अधूरी है. और बाकी ये सही है, इट इज अ फुली पैक्ड स्पिन अटैक, बट बुमराह इज द ओनली वन दैट कंसर्न्स मी. All right. So ये तो इस ODI सीरीज के लिए टीम है. So the news was that Varun Chakravarti is in right now in this ODI series. और बुमराह का नाम था बट बुमराह को नहीं. बुमराह का नाम था थर्ड मैच के लिए, सिर्फ पहले 2 मैचेस के लिए नहीं था. बट वो भी हटा दिया अभी. Maybe they want him to be fit for the Champions Trophy and no risk. Yeah, and also कि like वरुण चक्रवर्ती को ODI मैचेस मिल रहे हैं, वो बड़ी बात हो सकती है क्योंकि उसका फॉर्म है, सब अच्छा चल रहा है, तो उसको यूज करना चाहिए. So I think that was also good selection. But अगर उसको लिया है टीम सिलेक्शन में, but वो प्लेइंग 11 में खेलेगा या नहीं, that's a different question, and that makes us come to our next thing, which is playing 11. So ये है मेरी playing 11 where I want Rohit Sharma and Yashasvi Jaiswal to open the batting with Shubman Gill at 1 down because Shubman Gill is vice captain. So selector ने उसको vice captain बनाया तो उसको लेना compulsory हो जाता है in a way. Then I think Virat should drop down to 2 down and bring his experience into the middle order, and then I want Rishabh Pant to be the wicket keeper. And Hardik Pandya at 6 and Ravindra Jadeja at 7. It can be either Ravindra Jadeja or Washington Sundar. And then we have Akshar Patel, Mohammad Shami, Arshdeep Singh and Kuldeep Yadav. I want 2 pacers, Mohammad Shami and Arshdeep. Hardik Pandya can be my third pacer, but I don't think मैं उसको 10 ओवर डालते हुए नहीं देख रहा. Also, Ravindra Jadeja or Akshar Patel may still there is a fight, but if both play, we have a greater batting depth. Now I'll come to Shoaib. What do you think about this 11 and what will you change in your 11? Yeah, I think, see, if we look at the balance and the kind of strategy which generally Gautam Gambhir uses, like left-right combination and all, so this looks more aligned to what may happen in tomorrow's game. कि एक दो चेंजेस के ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है. बट मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो ये थी कि it's quite drastically different from this one. So in batting, I think we had a very good core in World Cup. So I didn't want to change that. Rohit, Shubman opening, Virat 3, Shreyas 4, then 5 KL. Now 4 Shreyas, 5 KL, yeah. And then 6th, I am skeptical like whether it will be Hardik, Akshar or Jadeja. I wanted to give this all-rounder option to the player where India feels कि इसको जाना है, वहाँ पे खेलना ही है in the spinners. क्योंकि हार्दिक I want to rest in the first ODI because he is as important as Bumrah one. And there is no doubt कि Hardik should be in 11 or not, or whether he has done enough practice or not. He has played Vijay Hazare, he has been continuously playing domestic. अभी 3 T20 भी खेले. So 6th slot should be given to somebody where they are seeing कि whether Jadeja wants to start. I would rather prefer Akshar or Sundar to have it because Hardik and Jadeja don't really need too much practice games. The only reason I don't want to give too much options in batting because that's a very fixed core who is definitely going to play all matches. Bowling में see it won't be a problem अगर Shami and Bumrah would have been fully fit, but they are not. So in bowling what I wanted is कि all 3 pacers should play.
Harshit, Shami, and Arshdeep. That's why I'm not playing Hardik, because all these Okay. three needs 10 10 10 over to ball to get into the rhythm. And two Hmm. spinners at 7 8 should be Kuldeep and Varun, because they haven't played a lot of cricket recently in terms of Kuldeep, और वरुण ने तो आज तक ODI को इंटरनेशनल खेला ही नहीं है. So I think bowling में Okay. we should go with 5 clear bowling options. It's okay. See, if batting depth nahi hai and all those things, we are not fighting for a win or lose game. But I think Yeah, these yeah. 6 players should give us at least 40-45 hours of good batting, if not 50. And main Okay. important thing to understand here is कि bowlers के पास बहुत ज़्यादा practice नहीं है अभी ODI की, और Yeah. 10-10 ओवर बहुत कम लोग Okay. डालते हैं. Quickly, I'll come back to you. Yeah, Just having views of Kunal. Kunal. What do you think about this 11, and what changes will you make in your 11? And then we'll discuss further. What I think here is that this is more of an experiment series where they Yeah. can give chances to players like Varun Chakravarti and Harshit Rana, क्योंकि उनको चाहिए कि बुमराह हमारा अगर fit नहीं है तो we want someone to come in, step up and वो आके wickets ले सके, तो they will give chances to तभी उसको squad में भी लिया कि in case बुमराह fit नहीं है तो we can replace, और वो chances देंगे कि आप खेल के देखो ODI में कैसे कर रहे हो, तो क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी में we see Harshit or maybe Varun playing instead of Bumrah if he's not fit. However, we all want Bumrah to be super fit and playing. In batting, I would say this is a good combination, but मुझे लगता नहीं है कि they will start with यशस्वी, or they maybe, as I said, कि experiment कर सकते हैं तो they can, but श्रेयस भी थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहे तो maybe he can come in, and केएल राहुल तो अभी ठीक ठाक फॉर्म में है ही, एंड ऋषभ पंत की मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में जगह नहीं बनती है, क्योंकि ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा कुछ अच्छा किया नहीं है ओडीआई क्रिकेट में. सो आई गेस ये एक्सपेरिमेंट सीरीज ही होने वाली है. सो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऋषभ पंत को इस सीरीज में विकेट कीपर ले सकते हैं, और फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आए तो मे बी वी कैन गो बैक टू केएल राहुल, एंड ऑल्सो हर्षित राणा मे बी प्लेइंग starting few games, because maybe Jasprit Bumrah would be available towards the end of the series, or maybe not. So I think Harshit Rana उन्होंने विकेट भी लिया है इंग्लैंड के सामने, and he is a player who comes up like England can't be prepared for Harshit Rana, and we saw that in the T20 match as well. But ODI is totally different thing. You have more overs to bowl, and we also saw that Harshit Rana को ज़्यादा overs bowl करने का चांस मिला था टेस्ट में, तो इन अ वे उसका डिटोरेट हो रहा था. सो मे बी आई से ही इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट्स 4 ओवर गेम ओनली, बट आई वुड स्टिल वांट दैट मोहम्मद शमी शुड बी fully fit to play, and how else would you know No, but अगर इस Keyur, सीरीज में हम the टेस्ट करते question here is कि you have done a gamble removing Siraj and bringing Harshit Rana, because Siraj ka you Yes. won't say कि he can't play ODI or he is not good enough. He is maybe not the best, but if you have to choose anybody outside Shami Bumrah, I think Siraj would have been one of the top contenders. So if we haven't done that, maybe we could have done that experimentation and all, but अब हर्षित राणा को लिया है तो गेम तो खिलाना पड़ेंगे ना, then only we can say कि yeah, he is not good or he is very good. तो I और think शमी को भी अभी correct, ही इज जनरेटिंग हीट, और उसको भी खिलाना जरूरी है, क्योंकि वी वांट, शमी ने जो 2019 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में किया था, कि वो अभी आके कर पाए, बिकॉज ही कैन बी अ गेम चेंजर फॉर अस इन ईच एंड एवरी गेम. सो ऐसा आपको लगता है कि हर्षित राणा को ज्यादा प्रेफरेंसेस मिल रहा है बिकॉज ही प्लेस फॉर केकेआर एंड गंभीर यूज्ड टू कोच mentor, so is that factor coming in, or what is it? see व्हाट आई थिंक इज कि वो खेलता सही है, बट जो उसके साथ किया कि उसका डेब्यू नहीं कराया टिल द ऑक्शन एंड एवरीथिंग, जब तक वो डेट्स आने थे, तो वो सारी चीजें शोज दैट समवन इन द टीम इज बीइंग बायस्ड एंड वी नो हु इट इज. सो खेलता सही है, मतलब इट्स नथिंग रॉन्ग विद दिस गेम, बट बायस्ड चीज तो नहीं चलेगी ना. I think see head we have like कि हमने नीतीश रेड्डी और
शिवम दुबे के पहले वेंकटेश अय्यर को खिलवा दिया है या नीतीश राणा का डेब्यू करा दिया है, दोज काइंड ऑफ थिंग वुड हैव बीन देयर, देन आई वुड हैव डेफिनेटली सेड कि हाँ बायसेस है. सी आई एम नॉट श्योर कि क्यों हर्षित राणा का डेब्यू लेट कराया. आई एम ऑल्सो नॉट 100% कॉन्फिडेंट ऑन हिज टेस्ट डेब्यू इन ऑस्ट्रेलिया. But yeah, I think if every coach and every batsman, if they monitor somebody closely, they definitely going to have biases. So Yes, yes. I think we can give that kind of leeway, especially when somebody is performing. हाँ, if it would have been very stupid call कि आपने बुमराह के ऊपर हर्षित राणा को चूज किया है या something like that. जैसे कि I didn't understood why they didn't play Shivam Dube in T20 initially. When he was added into the squad, उससे हम वर्ल्ड कप जीते. ही प्लेड इवन वेल इन फाइनल. तो थोड़ा बहुत बायसेस तो हर कोच में होते हैं, बट आई थिंक कि स्पेसिफिकली ऑन हर्षित राणा प्लेइंग इन इंडिया, आई वोंट जज इट कि बिकॉज गंभीर इज देयर, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग चांसेस. आई थिंक शिवम दुबे का स्ट्रीक है, 50 मैचेस लगातार जीता है वो T20 में. वहां पे तो आई आ रही नहीं इंडिया. आई थिंक मे बी हर्षित राणा को इसीलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि वो ऑलराउंडर है, जस्ट लाइक शिवम दुबे. Like to like. Yeah, like for like. So that's why. And quickly, if I want to glance on the playing 11 of England, जो अभी उन्होंने playing 11 डिक्लेयर किया है, जैसे करती है 2 घंटे पहले ही डिक्लेयर किया है इंग्लैंड क्रिकेट ने उनके सोशल्स पे. बेन डकेट एंड फिल सॉल्ट विल बी ओपनिंग and Joe Root at one down, Harry Brook, Josh Butler captain, Liam Livingstone, Jacob Bethel, Darren Cars, Chopra Archer, Adil Rashid, and Sakib Mahmood. So, what do you think about this squad playing 11? Keyur, I think अगर हम वर्ल्ड कप से देखें, so England has more things to worried about than India. India actually had almost 80-85% preparation. 15% में they have to do some changes to make that right combination. But England actually lost a lot of things. How to play ODI cricket, it seems, the way they had this World Cup campaign. And उसके बाद ऐसा कुछ वापस कमबैक दिखा नहीं हमें किसी भी ODI सीरीज में कि they have like thrashed anybody. So I think a lot depends on their performance, how Joe Root is gonna play, क्योंकि every other player don't know any other kind of cricket strategy. वो सिर्फ जाते हैं और they gonna hit the ball. So it will revolve around Joe Root. Anybody else, I don't see many other players who have different kind of batting strategy. One thing I didn't understand, like whether they are looking for any option to replace Moeen Ali, especially in Asian conditions, because पहले आदिल रशीद के साथ they used to have Moeen Ali, who is an all-rounder but a very experienced spin bowler. अब I think Liam Livingstone, Joe Root, all these guys can bowl, but if that is the logic, even Virat and Rohit can bowl. So they are not effective. Yeah. So I think Jacob Bethel वो रोल कर सकता है जो मोइन अली रोल करता था. But he is not in the 11. Yeah, he's in the 11. He is in the 11. Okay, I saw the wrong 11 then. So let's see if Jacob Bethel can do it. Then again, one thing is that he is, I think, left armer. Left arm. Yeah, and Adil Rashid is also leggy. So, but we also had those issues earlier. So let's see. It's more effective because India में इतने lefties है ही नहीं. हाँ. So, but they would be thinking again from Champions Trophy perspective, na. But yeah, one positive for England is कि they may be playing on the roads and we will be playing on the spinning tracks. So maybe they are preparing. Also the thing is Jacob Bethel, Brandon Cars और साकिब महमूद पहली बार इंडिया में आके खेल रहे हैं. And that's something to be noted because उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको भी यहाँ का थोड़ा कंडीशंस पता चलेगी क्या है. उनको हटा दें साइड में से हम, तो ये तो पूरा T20 स्क्वाड है. एंड अभी एक स्टेटमेंट भी आया सैम करन से और उसने बोला है कि उसका इंक्लूजन, उससे पूछा गया कि उसका इंक्लूजन क्यों नहीं है स्क्वाड में, तो उसने बोला है कि
what England board is trying to do is they are trying to create a team जो उनके लिए ODI भी खेलेगा, T20 भी खेलेगा. It would be a same set of squad. So they are more focusing on that, and this looks like जो रूट के अलावा तो कोई टिकने वाला है ही नहीं. अगर चले तो फिर चांद तक, नहीं चले तो रात तक. So one more topic I want to discuss is that vice captain role has been given to Shubman Gill. Any views on that? Sure, you first. Yeah, I think logically BCCI has done in the past also, and we are more like a traditional organization जहाँ पे they wants to concentrate leadership role to few people, and apart from Shubman Gill, there is no other guy who has been in consistently in the team for last 2-3 years, जिसको हम देख सकते हैं कि शायद ही अगले 10 साल या 5 साल खेलेगा, जिसको हम ग्रूम कर सकते हैं एज ए ऑल फॉर्मेट कैप्टन. सो आई थिंक वही मेन रीज़न है उसको वाइस कैप्टन बनाने का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लेट से समथिंग हैपन्स कि रोहित इज़ अनफिट टू लीड. आई डोंट थिंक गिल इज़ गोना लीड. That time I think Hardik or KL or anybody else can come and do the leadership role, but when you have the main captain in the team, that time I think Shubman will be the vice captain, so that he can get all those kind of experience and being part of the meeting कि क्या करना होता है कैप्टन को, what all he has to do. But जब भी ये रोहित और any other I think Sky won't be there, I doubt they will give Gill chances to lead in the big tournaments. Yeah, and Kunal, what do you think? And also, keep in mind the form of Gill is not so great in terms of test, but he's been doing wonders in ODI. So Kunal, yeah, whatever. So मैं वही बोल रहा हूँ कि Champions Trophy is going to be very important from because players like Ruturaj Gaikwad has been eyeing on his position. So it is very important for him. अगर यहाँ पे नहीं चला तो भाई मेरे हिसाब से फिर संकट आ जाएगा. तो ठीक है, बना दिया वाइस कैप्टन क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसको ड्रॉप करे या क्या, वट एवर रीजन इट वॉज. ही इज गुड एट लीडिंग, वी सॉ दैट इन IPL. ही डिड गुड, ही बैक प्लेयर्स, एंड देखते हैं अभी क्या होता है. बट मेरे हिसाब से तो उसका फॉर्म इतना भी अच्छा नहीं था कि उसको वाइस कैप्टन ही बनाते. हार्दिक वाज अ गुड चॉइस. फॉर्म वाइज तो सी कैप्टन भी वो तो फिर ODI he was कैप्टनसी कोटा पे ही खेलेंगे ना. नहीं ODI I think in the calendar year I think 2 years ago maybe he was the highest run getter in ODI. Hey, even in 2023-2024 cycle he did good, but ODI में उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है. T20 तो अब खत्म ही हो गया उनके लिए. तो लेट्स सी क्या होता है. बट हार्दिक वाज डेफिनेटली अ बेटर चॉइस देन गिल. So what do you guys think who should open in Champions Trophy and in also in this series? I think Yashasvi and Rohit. Yashasvi has a lot of time to prove, but I think we have a proven combination. You lost only one game, but the 10 game we won was like almost one-sided, all 10 games, and Gill played really well. So I don't think why break something, why repair something that's not broken. I think Gill and Rohit should. All right, Kunal, what do you think? मतलब ओपन का तो मेरा सॉर्टेड है कि यशस्वी एंड रोहित शुड गो फॉर इट. मतलब यशस्वी ने हर फॉर्मेट में प्रूव किया है, बहुत अच्छा किया है, एंड आई एम वेरी श्योर कि ODI क्रिकेट इज समथिंग जो उसका फोर्टे होगा. वो बहुत अच्छा खेलेगा. मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब वो उसको थोड़ा टाइम भी मिलेगा और उसके शॉट्स अच्छे हैं, उसकी स्किल्स अच्छी हैं, बहुत फोकस्ड है, तो ODI क्रिकेट में ही इज समवन हु कैन डू ग्रेट थिंग्स. तो लेट्स वेट. एंड ODI सीरीज में तो मुझे लगता है रोहित और यशस्वी आने वाले ओपन करने. तो देखते हैं क्या होता है. if those two open तो गिल को 1 डाउन ही आना पड़ेगा और कोहली को फिर 2 डाउन जाना पड़ेगा. गिल 4 आएगा आई गेस. तो फिर IPL का क्या होगा? 4 पे खेलेगा. कोहली नहीं छोड़ेगा अपना पोजीशन. But I think कोहली को maybe टेस्ट टाइप रोल दे सकते हैं 2 डाउन with his experience in the middle order, because अपना क्रम्बल तभी होता है जब मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं खेलता. As I said कि एक्सपेरिमेंट होना है सीरीज में, तो कुछ भी हो सकता है. It will be full of surprises maybe, और मे बी बेसिक से बेसिक चीजें होंगी, हमें भी नहीं पता होगा. तो लेट्स सी क्या होता है. एंड दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. चैंपियंस ट्रॉफी लानी है, तो
कितने साल 12 साल बाद आएगी अगर आएगी तो Yeah. वेट And करते हैं also the very most concerning question of the day, which is Bumrah's fitness, how it is, and if he's not playing this series, and if he may skip the starting of Champions Trophy as well. अगर खुदा ना रास्ता ऐसा हो जाए, अगर बुमराह ना खेल पाए चैंपियंस ट्रॉफी, तो क्या हमारी बॉलिंग लाइनअप, हमारे फास्ट बॉलर्स इनफ है अभी जो हमने सिलेक्ट की है? और एंड आल्सो वी कैन आल्सो गिव अ इंजरी रिप्लेसमेंट लेटर. यू कैन आल्सो सजेस्ट हु इज नॉट इन द सिलेक्टेड 11. यू कैन सजेस्ट. व्हाट आई थिंक इज कि टोटली डिपेंड्स कि हम कैसे विकेट्स पे खेल रहे हैं उधर, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे विकेट्स पाकिस्तान जैसी टीम के एक भी विकेट नहीं ले पाए थे जब T20 वर्ल्ड कप था, और रिजवान और बाबर ने धो दिया था उनको. शायद बुमराह था तब उस स्क्वाड में या नहीं था? नहीं तब नहीं था, इंजर्ड तब नहीं था. ओके, तो ही इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इन एनी कंडीशंस, बट दुबई के विकेट्स पे डिपेंड करेगा कि बाकी बॉलर्स कैसा करते हैं. बाकी इट्स गुड, मतलब बुमराह नहीं है तो आई गेस अर्शदीप एंड शमी वर द बेस्ट ऑप्शंस. I really have my heart with Bhuvneshwar, but he has not been doing great things. So you would pick Bhuvneshwar injury replacement? ना, वो तो कहीं से आता नहीं, क्योंकि उसका ऐसा कुछ किया नहीं उसने भी. तो आई गेस हर्षित राणा वुड बी द बेस्ट. अगर चक्रवर्ती अच्छा करता है तो मे बी दे विल गो विद अनदर स्पिन ऑप्शन, बिकॉज वो मिस्ट्री है, मतलब मिस्ट्री सॉल्व हुई थी एक बार, बट he has come back again and he has proved himself. So मे बी वो आके ऐसा काम कर सकता है मिडिल ओवर्स में कि बैट्समैन उसको नहीं पढ़ पा रहे एंड ही इज टेकिंग देम ऑफ. एंड शोएब, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक सी प्रॉब्लम है कि जो भी हमारे रेगुलर प्लेयर है उन्होंने खुद ने ही इतने टाइम से खेला नहीं ODI, सो दैट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द मिक्स. बट आई थिंक फिटनेस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न. So for a tournament like this, I would prefer 100% fit Harshit Rana and Siraj over 50% fit Shami and Bumrah, because I think a lot of success or failure will depend on the spinners. So I think Varun Chakravarti, Jadeja most likely, and Kuldeep, at least two of these three is obviously going to play. So it depends a lot on how they are going to perform. Obviously, if Shami and Bumrah can come in their prime form, we are almost winning the trophy. But even if that doesn't, I think ODI mein this is not a very big issue. Hardik can bowl 5-6 overs for sure. Other all-rounders can support him. And the only problem is who will be our two frontline bowlers. I think if Shami is rusty, we should go with Arshdeep and Harshit or Harshdeep and Siraj. तो सिराज मुझे नहीं लगता आएगा पिक्चर में, बट टॉकिंग अबाउट हर्षित, हाँ डेफिनेटली वो आ सकता है, बट वील रियली प्रे एंड होप कि बुमराह ही आए, क्योंकि वैसे भी इंडिया का रिकॉर्ड दुबई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आई वुड से. एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू क्विकली हाईलाइट कि दुबई में जो अभी जो गेम्स हो रहे हैं T20 गेम्स, उसमें ऐसा हो रहा है कि लास्ट में ड्यू बहुत आ रहा है. So maybe spinners may not work that much. So pacers can come into play. So we actually need some real pacer because we don't know Shami ka fitness kaisa hai, and we don't know Arshdeep ka ODI mein. I think he'll do fine, but he's still not tested well enough. So we need someone who is more experienced. I say Siraj has some experience, so maybe he can be the injury replacement if anything happens to Bumrah. So what do you think? Spinners इफेक्टिव रहेंगे कि नहीं ऐसी कंडीशन? एक्चुअली दुबई का जो विकेट है, वैसे जो जैसे IPL में भी था और जो पहले के टूर्नामेंट्स में था, इतना ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक नहीं है. वो है फ्लैटी, बट डिपेंड्स कि कैसा जा रहा है बॉल, कैसा स्किड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें पे डिपेंड करता है. तो इतना ज्यादा भी अच्छा स्पिन विकेट नहीं है जितना हम उसको बता रहे हैं. और मे बी BCCI की पावर में पता ही है, तो मे बी दे आर सॉर्टिंग थिंग्स विद द दुबई क्रिकेट बोर्ड एंड creating their own tracks to maybe get some spin touch and destroy the other teams. But spinning track तो वो जहाँ तक अभी तक हमने देखा है इतना ज़्यादा नहीं है वो. No, I think slower wicket is what I feel we can say. जो ऑस्ट्रेलिया या इधर मिलते हैं हमको पेस एंड बाउंस, वैसा कुछ नहीं होता उधर. एंड डेट्स वाई लाइक बुमराह के पेस या शमी के पेस से मीन्स
आई एम सेइंग कि नॉर्मल बॉलर जो है हमारे, जो 145 प्लस ज़्यादा क्लॉक नहीं करते या इतने थ्रेटनिंग नहीं होते, दे कैन ऑल्सो डू द जॉब, दैट्स द आई थिंक हार्दिक पांड्या का वर्कलोड तो बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आई थिंक उसको तो इस ओडीआई सीरीज में तो रेस्ट ही करवा देना चाहिए। मेरा तो मैक्सिमम एक मैच खेलना चाहिए। लास्ट मैच शुड बी गिवन टू हार्दिक। पहले दो में जितना तीनों पेसर्स खेलेंगे ना उतना बेटर रहेगा। Yes, yes. And now let's come to our final segment, the bonus segment, which is the trending topics in cricket right now. Let's talk about Virat Kohli's Ranjitrophy comeback. Any comments, guys, on this? Maybe I would say let's not talk about it, क्योंकि वो No. तो flop हो चुका है। But we have to, because internet wants controversies and internet wants Virat Kohli, because the whole stadium was jam packed and there was line for 8 kilometers outside Firozshah. Sorry, the stadium has been renamed. So what do you guys think? And after that he didn't perform. So is the test was still continuing for Kohli, or will he come back? Yeah, it opens more questions than answers. उन्होंने आई थिंक they wanted to just say कि we are not that big, we don't have that ego, we can play domestic. Maybe it was a pressure from bcci or they opted for it, I don't know. But if you look at the matches they selected, Mumbai played Jammu Kashmir, that time Rohit started. अभी ये शायद पहला मैच जो था जब थोड़ा गर्दन में अकड़न वगैरह हो गई थी, वो थोड़ा टफ टीम थी. सो एंड इवन आफ्टर दैट मतलब आयुष बदोनी इज स्कोरिंग देयर, कोई भी प्लेयर सिंगल डिजिट में नहीं गया एंड यू गेट बोल्ड. तो ऐसा भी नहीं है कि आप वो आउटसाइड ऑफ स्टम्प स्विंग पेस एंड बाउंस इनसे बीट हो रहे हो, आप अंदर आती हुई बॉल पे भी बोल्ड हो रहे हो. तो आई थिंक अ लॉट हैज़ टू बी डन नाउ in test cricket, but I think he should forget about this particular event or last few months in test cricket, because he is in personally I believe like he is the greatest ODI player ever. So neither we should change his number from number 3. The more balls in ODI Virat Kohli plays, the better the chances for India win. And second thing is like he shouldn't think too much about this red ball at least for next 1.5 month. Then he can think about all these things. Yes, and also मैंने जब जम्मू कश्मीर की टीम के बॉलर्स का बॉलिंग देखा, इवन प्रदीप सांगवान, आई थिंक सांगवान इज नेम सांगवान, हिमांशु सांगवान, द बॉलर हु टुक विराट कोहलीज विकेट, हिमांशु सांगवान, हाँ. उसको किसी बस ड्राइवर ने बोला था कि विराट कोहली को स्टंप पे डालना, एंड ही गॉट विकेट. मैं दिखाना चाहूंगा बस ड्राइवर कौन था, 1 मिनट. या सो देख लिया. I saw that. So bowling at a decent pace and swing. So I was feeling like, dude, if we have such bowlers, why are they coming up into Indian teams or even the probable 11s? इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ एक ही मैच देखा है. इफ यू से एंटायर रणजी ट्रॉफी, आपको इतने सारे प्लेयर्स मिलेंगे ऐसे कि आप कहोगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों अभी भी हर्षित राणा को खिला रहे हैं. Yes, yes. हाँ, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में सी द प्रॉब्लम विथ, मतलब मैंने जो नोटिस किया है कि बीसीसीआई में अगर आप आईपीएल में बहुत अच्छा करते हो ना, तो आपको T20 पे जज नहीं किया जाता, आपको कोई से भी फॉर्मेट में कहीं ना कहीं से आपका एडिशन हो जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक रजत पाटीदार का जितना मैंने देखा है, लाइक ही इज़ नॉट द बेस्ट टेस्ट प्लेयर इन एमपी. in white ball he is great, but he made test debut before white ball debut. तो वो हो जाता है कि कोई T20 में भी अच्छा कर रहा है बट वहाँ जगह नहीं है, तो कहीं और से डेब्यू करा दो, और जो एक्चुअली रणजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो कई बार रुक जाते हैं. टॉक अबाउट अभिमन्यु ईश्वरन, भाई उसने कितना बढ़िया खेला है, कितना सही टेस्ट बैट्समैन है, एंड स्टिल नॉट गेटिंग चांसेस, एंड वी आर स्टिल गोइंग विद गिल एंड स्टफ. नहीं, बहुत बहुत अनफेयर है. And also, I just want to talk briefly about the other trending news, which is Pakistan not being ready for Champions Trophy because the groundsmen have still not given any updates on if they are ready or not.
and it's almost a deadline. And what do you think about that? I think they already have a backup plan, na, Dubai and UAE. Yeah. So BCC means I think ICC also knew it. मेरे हिसाब से कि कुछ हो सकता है तो नहीं, I guess I'm sorry to interrupt, हाँ. but there was an update कि सिर्फ एक तो स्टेडियम ही ऐसे हैं जिस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, but they were also doing pretty well और स्पीड से काम चल रहा था. But if not there, तो maybe they can switch to other venues in Pakistan. I'm not sure, but एक update मैंने पढ़ा था, and I even don't know if the news was accurate. But it would be ready in next 5 to 10 days. बट द थिंग इज उनके पास एक ही जॉब था कि इतने टाइम से अगर चैंपियंस ट्रॉफी तुमको ऑर्गेनाइज करना है एंड आप क्या करना है, तो आपका काफी टाइम था, 8 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है. उनका तो फोकस उनके था कि इंडिया स्टेडियम क्यों पाकिस्तान रेडी है. नहीं है? उनका हाँ, फोकस but नहीं था वो कि ठीक इंडिया है. पाकिस्तान है. अब तो दूसरी भी टीम जाएगी या नहीं पता नहीं, वो नहीं पता चल रहा है कि वो लोग भी खेलेंगे या फिर वो लोग कहाँ खेलेंगे. आई थिंक So, दो तीन मतलब एक तो क्या होता है ना कि थोड़ा कंट्रीज का भी फर्क होता है, तो दे डोंट प्ले अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो इसलिए उनके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग सच हाई स्टैंडर्ड के स्टेडियम इज़ टू मच. सो लेट्स होप कि वहाँ पे वापस क्रिकेट स्टार्ट हो, दे डू द राइट थिंग्स रादर देन रॉन्ग थिंग्स. तो बट आई थिंक मोस्टली हो जाना चाहिए. ग्राउंड तो आई थिंक सही हो गए. स्टेडियम में अगर कुछ कमी पेशी भी होती है तो दे कैन सेल लेस टिकट्स एंड ऑल. क्विकली जस्ट सेइंग दैट क्योंकि बाकी सारी टीम्स ने अपने स्क्वाड्स ऐसे सिलेक्ट किए कि वो लोग पाकिस्तान में भी खेल रहे हैं और यूएई में शायद खेल सके. सो सिर्फ इंडिया ही है जो यूएई का देख के स्क्वाड सिलेक्शन किया है. तो इसमें आप कुछ बोलना चाहिए कि बाकी सब टीम्स कैसे प्रिपेयर कर रही है पाकिस्तान में फेस करने के लिए, या फिर क्या कंडीशंस वहाँ डिफरेंट होंगी. स्पिन फ्रेंडली है मोस्टली हम देखते हैं, बट रन स्कोरिंग भी है काफी, तो उसके लिए कुछ व्यूज. सी आई हैवंट सीन मच क्रिकेट, बट जितना पाकिस्तान का पीएसएल और कुछ टेस्ट सीरीज के स्कोर्स आते हैं उससे तो नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली. अभी कुछ लास्ट इंग्लैंड वाली सीरीज़ में दे ट्राइड टू चेंज द पिच, बट उसके अलावा तो बहुत मतलब कई ग्राउंड्स तो ऐसे कि वहाँ पे मतलब जो इंटरनेशनल प्लेयर्स एक सिक्स मतलब नहीं मार पाते, उनके लगभग बहुत सारे सिक्स वगैरह लग जाते हैं. सो लेट्स सी कि हाउ इट गोज. बट आई थिंक पाकिस्तान में उन टीम्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा जो नॉन एशियन है. वंस दे कम टू यूएई, शायद एशियन टीम स्पेशली लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश हु आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पिन, तो हमारे साथ शायद यही इशू है कि हमारे 2 मैचेस न्यूजीलैंड से पहले इन दोनों टीम से, और न्यूजीलैंड के साथ शायद हमारा कुछ साइकोलॉजिकली हो जाता है प्लेयर्स को. सो इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द टफ ग्रुप फॉर अस. बट सी क्या होता है. बाकी टीम्स के लिए आई थिंक वो पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं एंड दे आर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका प्लेइंग ईच अदर. बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं तो, क्योंकि अगर विकेट ही नहीं करेंगे तो एवरीवन कैन स्कोर रन्स. बट बॉलिंग पे मेरे हिसाब से बाकी टीम ज्यादा फोकस करेंगी. एंड दुबई में जो हम ट्रैक्स देखेंगे वो आई गेस बॉलिंग फ्रेंडली देखेंगे, एंड इंडिया एज अ डीप बैटिंग, तो आई गेस चीजें सही होंगी इंडिया के लिए. बट बिकॉज वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, एंड द सीरीज इज कमिंग, एंड आई गेस ये बहुत हेल्प करने वाली है हम लोगों की just before the Champions Trophy. Yeah, so I think the main point of debate is it biased that India is getting all this, and is it controversial as well that India has a totally different squad selection and other teams are having varied squad selection basing on 2 countries. So is that controversial or not? Maybe there's a plan with ICC, और वो लोग ये सोच रहे हैं कि they are gonna monitor how the wickets will be. So वही देखेंगे पाकिस्तान में उससे related wicket दुबई में बिक जाएगा. Not a big deal for ICC, but let's see कि क्या होता है. I guess there would be something जिससे उनको ये थोड़ा जो bias वाला factor है, सिर्फ हमने नहीं रेस किया होगा, जो खेल रहे हैं उन्होंने भी ऑब्वियस किया होगा ये, तो I guess थोड़ा तो कुछ करेंगे वो लोग. Yeah, but the thing is the pitches the grounds are quite small in UAE. Yeah, that would be the main point. दुबई ग्राउंड बड़ा है, also the ring light, catches छूटते हैं, बॉल नहीं दिखती है,
बहुत सारी चीजें। So this was our review and analysis video of India versus England ODI upcoming series. Please do comment in the comment section what do you think about it, and please do like and subscribe to the channel. Let's take a time out and see you guys later. Bye bye.